Hi guys, what is up? What is up? Just waiting कि बहुत सारे लोग हमको join करेंगे. Then we'll start with the live. Hey guys, तो आज का live is like not really to perform anything or it's just that I wanted to interact with all of you. I just wanted to talk. That's it. You all know कि मेरा भी नया गाना निकला है सिकंदर कालो के साथ. That's Baby and that's already crossed what 40,000 views. I am so happy. Thank you so much जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे गाने को प्रमोट किया, गाने को शेयर करा, सुना, उस पे कमेंट किया, अपने दोस्तों को सुनाया. I am so blessed. Thank you so much. Hi Shani. Hi Imran. What's up guys? What's up? What's up? What's up? सब कैसे हैं घर पे? बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच आशीष. आई होप आप सब लोगों के घर पे भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे. आई होप आप लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है. अभी जो दारू की वजह से लॉकडाउन खुला था उसकी वजह से और ज़्यादा फैल गया है. 50,000 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है इंडिया में. बैड न्यूज़. टेल अस अबाउट योर न्यू सॉन्ग. यस, द न्यू सॉन्ग दैट जस्ट रिलीज्ड 2 दिन पहले, दैट इज बेबी विद सिकंदर कालो. मैंने उसे खोल ही रखा है यहाँ पे अभी. This is Baby. It's crossed like 40,000 views. Thank you so much. I am so happy how this turned out. हमने बहुत मेहनत करी थी. Like literally इसकी बीट हमने 3 बार बलराज को बोला था कि चेंज करने के लिए. And finally we have a banger. मेरी baby. So yes, let me know in the comment sections if you have any questions about the song, about me, about my future projects, anything that you want. I'm up for it. Josh is already high enough. Thank you, Sid. It is. You guys are the best. Skrrr. It's not skrrr, it's like skrrr without the S. Hey Agzi, I love the song Baby. Can you say Hey Sakinaka? Sakina, sorry. Sorry, Saki. No. आग है song. Thank you so much. आग लगाते हुए. Shoki Shan. Thank you. Sub Shan. That krrr. Everybody write krrr in the comment sections. So this is just the time that I, want to interact with all of my fans. Get to know you. You get to know me a little more personally. क्योंकि अभी इस time पे we can't really go perform anywhere. So I just wanted to know you. ताकि अगली बार when we personally meet, we have that connection. सिद्धू मूसावाला के साथ collaboration. That's like a dream collaboration. Let's see if that happens. Please collaborate with Void. Well, I am coming up with VJ Galen and Void on MTV Hustle from Home next Sunday on MTV only. So watch out for that. Maybe we can collaborate. You never know. Imagine Freddie Mercury's effort on Bohemian Rhapsody. I know, man. First of all, that was an amazing song, and Freddie Mercury is like the best performer alive. Not sorry, yes. But I mean. When is your new song coming up? I just released like 2 songs abhi. 2 दिन भी नहीं हुए हैं. Just wait for some time. Me and Balraj are making some hits, some bangers. You are not ready for it. Krishna X Agzi. But let's see. Maybe we can do that. Please collaborate with Rajakumari ma'am. I am so up for collaborations in this quarantine. Definitely. There are so many people who I am collaborating with right now. So, Rap Demon is in the house. Hey, आपका Rap Demon के साथ ट्रैक क्यों नहीं आया? नेकी और पूछ क्या बताऊँ? आपको तो सर पता ही होगा ना कि क्यों नहीं आया गाना. हाँ, but I'm just hoping Rap Demon की after this coronavirus settles down a bit and people are definitely so excited for it. तीसमार खान, आप सबको पता है कि मेरा Rap Demon के साथ आने वाला था but नहीं आया unfortunately. And we both were literally so sad about it. We got a call from someone in the industry that we shouldn't really release it right now and बहुत ज़्यादा बुरा scene चल रहा है अभी. So yeah, not right now, but after coronavirus settles down, definitely that is the first song that I'm gonna release. Promise. What keeps you motivated all the time? Well, because I want to be in the documents. जब इंडियन देसी हिप हॉप सीन की हिस्ट्री के बारे में बात होगी, आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, दैट फीमेल MC who was there. So yeah, that's what keeps me motivated. I like to be a part of history, and I know that there's a lot of
females that do want to come up and they're not able to come up, and I'm gratefully and very blissfully inspiring a lot of females out there. So yeah, that also keeps me motivated. अगर मैं ही रुक जाऊंगी तो how would other femcs come up, right? So yeah, that's about that. सिद्धू मूसेवाला x Agzi fab collab. Yes, अगर ऐसा हो जाता है तो definitely that is gonna be a fab collab. Are you using eye lenses? Definitely not. My eyes are brown. This is just a filter. I look ugly. Just kidding. I don't. I just like it. Because Kylie Jenner uses it that much. That's why. I'm trying for Hustle too. I wish मैं select हो जाऊँ. You and King are my personal favorites. Thank you so much. I also hope Fire Music that you get selected. अभी MTV Hustle season 2 के auditions I don't think अभी शुरू हुए हैं, but stay tuned to MTV Hustle का official page so that you know you can give your auditions. Sherni in the house. Yes, Rohit Bua. Agzi की गाने बिजली खुद ही लगे जिमें तितली. ओहो. All my Punjabi fans out there, I am so happy that I have Punjabi fans क्योंकि मेरे गाने शुरू से are like a kind of a fusion of English and Punjabi because my mom, dad and everyone here are Punjabi, so that just comes from within. So yeah, bless up all my Punjabi fans. Like, what made you jump up from a banker to a hip hop girl? Jen is asking me. नहीं, I think you got it wrong. I have always wanted to be a rapper, but because मेरे घर वाले they didn't really support me financially, that's why मुझे जॉब करनी पड़ी ताकि मैं अपनी म्यूजिक वीडियोस पे पैसे लगा पाऊँ. तो जैसे ही मुझे फिर MTV हसल का कॉल आया that a reality show of rappers, I'll give you a sneak peek that what really happened. Like, not a lot of people know this, but मैं try कर रही थी कि मैं Splitsvilla चली जाऊँ क्योंकि I just wanted to be on stage and I wanted to be famous and I wanted people to listen to my music. But I am so glad कि मेरा selection नहीं हुआ MTV Splitsvilla के लिए. I tried giving an audition there. So yeah, जो होता है अच्छे के लिए होता है. Thank goodness कि एक like just imagine law of attraction is so strong कि मेरे खुद के लिए I would believe so मेरे खुद के लिए एक MTV ने MTV Hustle start कर दिया and I was selected there. So yeah, जैसे मेरे को कॉल आया I just left my job and everything. जो 2 महीने का time period सर्व करना होता मैंने वो भी नहीं करा. I just like fuck off Barclays. I'm like yes, this is what I want to do and that's what I am gonna do. हिंदी में बात करिए, क्षमा कर दीजिए हमको, हम हिंदी में आपसे वार्तालाप करेंगे. हम Agzi some words for you. तेरी अख च नशा जो भी तेनू देखे ओ हो जाए फिदा. So yeah, let me know if you have any other questions for me. You are not made for Splitsvilla, you are made for hustling. That's so true. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं Splitsvilla नहीं गई. So happy. मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता इस टाइम पे क्योंकि God damn, that show is fake. मारे हरियाणा की छोरी आग लगा रही से यस. रे मैं हरियाणा की छोरी सू आग सी मंच पे आग लगा दूंगी. बेरा ना पाटेगा जो कोई बनिया घड़ा चौधरी उन्हें बास्ते लगा दूंगी उड़े पहुंचा दूंगी. यार एक बार बेबी सुना दो. मेरी बेबी तेनू की चाहिए तेनू भी पता करती खता लिखा मैं फिर भी खता. मजा आए नहीं मजा तेरी है रजा बेवफा. तेरे मेरे नींद नहीं जचदी जचदा नशा. Even Dave Haniv Fire in Bollywood Ragini Adam sleeping. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि या अल्लाह हुस्न करीब है, या अल्लाह मेरा नसीब है, या अल्लाह मिली हबीब है. होठ भी नीचे समंदर है मेरी बेबी तेनू की चाहिए. Yes, you guys love my don't you? All of my fans, you know, right here with me. So yeah, what else do you want to ask me? आज मुझे बहुत सारा काम करना है, but I just thought that you know I wanted to talk to you. I was not really feeling that fine, so yeah. मैम एक बार शेरनी दहाड़ेगी, सब चुप अब शेरनी दहाड़ेगी.
न भेड़िए न राजनीति रोक दे मैं ऐसी, मैं आग सी मैं खुद ही जल के जग सवार देती। मैं वो आर्टिस्ट जो ना साइंड हो, इंडिपेंडेंट, आई एम द चोजन वन, आर्यन प्योर डिसेंडेंट। हिप हॉप मेरी जात आई एम दी ओजी, रैप करा फैंस नाल चाहिदा होर की। यूज होया मेरा आर्ट ऐसी मेरी हसल, जिनने कितना नाम शक्ला भी हुन याद नहीं, मान नहीं जान अब है मुझको तुझसे काम नहीं। मेरी जीत उसमें किसी का भी है हाथ नहीं, सेल्फ मेड। मेरी माँ की एक नाराजगी, क्या नाराजगी? बुगाटी ले लो बेटा, ऑडी में वो बात नहीं। यस। Do you have your own studio? Well, I don't really have a studio. It's just kind of a mini investment that I did on my own बहुत साल पहले. This is my mic. This is like a home studio. This is my laptop. This is my M Audio का gear, M Audio M track. I am so sorry, Anant keeps calling me. Yeah, so this is the kind of studio that I have. आपके कर के ही तो दीवाने हैं. I can't even say कर without even कर doing it. Krr is love. Thank you. So many people. I love you all. Love you, ma'am, 10,000 times. I love you 3 infinite. Like 3 into x, 3 into 10 के ऊपर infinite. यही सुनना था ऑडी में जो बात नहीं, जबरदस्त मैम, थैंक यू। आप लोग लिटरली मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, एंड आई कांट रियली स्टार्ट टू थैंक यू इनफ। तो दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सब लोगों को, क्योंकि इससे पहले when I was just hustling and I did not really have anyone who was listening to my music, तब मेरे पास कोई नहीं होता था to support me. There were just a handful of fans that I had. And shout out to all of those fans जो भी यहाँ पे अभी हैं and वो मुझे MTV Hustle के पहले से जानते हैं. You are the real deal. And all of those people जो अभी अभी मुझको join कर रहे हैं after MTV Hustle, ये सिर्फ एक start है. And we are gonna go so big. I am planning on taking Desi hip hop to an international level. I am literally thinking about international collabs. I am in talks with a lot of female MCs from, outside India. So yeah, that's my vision for hip hop. That's my vision for myself. And I'm hoping कि आप लोग मुझे support करेंगे उसमें भी. And you guys will be actually so happy when I go international. You'll be like, yeah, I told you, this is Agzi. India के लिए Agzi और internationally Agzi. So many hearts, so many questions. Okay, just 5 more questions and then I'll leave. Okay, I really need to work a lot. एक हसल का सॉन्ग गा दो, बट दूसरे कंटेस्टेंट्स का I don't really remember. EPR बना, श्रीनी बना EPR. That was the first time I felt like doing hip hop forever. That's all I remember. Krr gang be here. Yes, you all are Krr gang. Yes mama, for sure, full support. Thank you. आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एलोवेरा। आजकल तो मैं वो भी नहीं लगा रही। हाँ भगवान जी प्लीज मेरे ध्यान रखें आप। खाई तो भी गेरा मेरा प्यार गा दो। ओ किंदा खाई तू वगैरह मेरा प्यार, खाई तू वगैरह मेरा प्यार, उमड़ ले खाई तू वगैरह मेरा प्यार, सैर करावांगा तू चलनी, सैर गड्डी मेरे हाथ च सी, मैं कैसी है जो रब ने की, वो मैं दोनों गिरे मेरी वजह से दिखाई में, पर केवल उठी मैं। खैर मेरी जिंदगी तो शुरू से पनौती, हर दिन है चुनौती, मदद मंगनी नहीं आंदी पर क्यों मेरा तू कंधा बनदा, मेरा फंदा तेनू लगदा, हूँ तेरे साथ पर किसे रो मैं रात भर, सो मैं रात भर, जान कर किसी की जान है हाथ पर, मुझे ना तू प्यार कर वार कर, हंसने का हक है क्या मुझे दर्पण, न कभी बनूंगी मैं सर्वगुण संपन्न, कैसे तुझे अपना मैं मान के तुझको भी करूँ खाई में अर्पण, खाई में अर्पण। मुकिंदा खाई तुम वगैरह मेरा प्यार, खाई तुम वगैरह मेरा प्यार, उमड़ ले खाई तुम वगैरह मेरा प्यार, मुझे करना तू शकनी। खाई प्लीज डोंट मेक मी क्राई। आप लोगों का लिटरली आई थिंक फेवरेट गाना है खाई, मेरा भी था। मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा था जब मैंने खाई को ब्रेक डाउन करके उसका एक रैप वर्जन बनाया था। सो आई एम गोना प्रॉमिस ऑल ऑफ यू गाइज वन थिंग, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि खाई का एक और वर्जन है, द ओरिजिनल वर्जन जिसमें रैप नहीं है। सो
this is the first time you're gonna hear this from me. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक एल्बम बनाने वाली हूँ real soon for all my real fans out there, and we're gonna promote it in a real professional way. And उसमें मैं ये खाई का version डालूंगी. That is the original version of it. So a new album coming up, no EPs in that shit. A proper album coming up with Khai ka original version. Let me know if you're happy about that. Let me know in the comment sections right now. This album will be for all of my true fans. आप इस album से मुझको और अच्छे से जान पाएंगे कि मेरे दिमाग में क्या चलता है, how am I as a person, and all of the things that I've gone through. So yeah, let me know. Favorite, you killed it. It just hits different as compared to other songs. Thank you so much. Yes, Nikhil. Waiting for that. Rajwanshi abhi keh rahe hain. So many emojis. Sinom Chaudhary keh rahe hain Khai. Some lines of Lahore, please. We can do that later. Yes, बहुत सारा प्यार. Happy. जल्दी लाओ album दी. I'm gonna work on it. अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि making an album is a full-fledged job and उसमें काफ़ी टाइम लगता है and गाने लिखना बस ऐसे नहीं हो जाता. So yeah. In the meanwhile, I am working on some other artists' albums. Like you can expect another collaboration with a person from KKG. I can't really name who, but you can expect that. I just completed Aaj Hi, that verse, and it's gonna be fucking amazing. We want Bella and Agzi. Well, we were in talks. I'll give you a quick sneak peek. So, जो rap game गाना है, I was gonna do it with Bella first, but he was, he had some work to do, and I had to release it that Friday. So मैंने गाना खुद ही complete करके I released it. So we are coming up with a new song as well. Don't worry. And उससे याद आता है कि मैम rap game की hook line गा दो please, सुना दो. मैं पूरा गाना ही सुना देती हूँ. I didn't really promote. I forgot to promote rap game, right? There you go, rap game. जिसको भी आता है, sing it with me. Rap game. Agzi's love. Thank you. I'm your biggest fan. Thank you, Rama. Rap game. Rap game. Rap game. Daisy. Rap game. Big block. तेरे मेरा बाप. दो हाथ. एक रात किल दोगे खाट. Rap game. Big block. दो हाथ. एक रात.